सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सिंध। आऊं हाजी हो सिद्रा अली हाजी पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। उम्मीद है अवां सब ठीक हूंदो, खुश हूंदो, घणी साईं जी बाज ऐं करम में हूंदो। अॼु असां वटि तव्हां लाइ सरप्राइज़ आहे। अहिड़ा टॉपिक्स आहिनि जंहिंजे बारे में शायदि असांजा ॿार जेके न्यू जनरेशन आहिनि उन्हनि खे काफ़ी शयुनि जे बारे में नाहे ख़बर, ना ही टॉपिक जे बारे में एतिरो वधीक ॼाणींदा हूंदा। मीडिया साइंस जे बारे में असां वटि जे गेस्ट आहिनि उहे पंहिंजे पाण में हिकिड़ो सरप्राइज़ आहिनि। उन्हनि जो तव्हांखे तारीफ़ कराईंदी हलां, पर तारीफ़ कराइण खां पहिरीं तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाईंदसि त अॼोके ॾींहं ते हर साल दुनिया दिमाग़ी सिहत जो आलमी ॾींहुं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मल्हायो वेंदो आहे ऑन टुडे दिस डे। ऐं असांजे जेके अॼु जा गेस्ट आहिनि उन्हनि जे बारे में आउं तव्हां सां तारीफ़ करायां, उनखां पहिरीं ॿुधाईंदी हलां त अॼु असां तव्हांखे स्कूल्स त न यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजिस ऐं उन्हनि जा एक्सपीरियंस ऐं जंहिं टॉपिक ते जंहिं डिपार्टमेंट में कमु कनि पिया उनजे बारे में तव्हांखे नॉलेज ॾींदासीं। इंशाल्लाह जो प्रोग्राम इलाही मोटिवेटिंग ऐं अवेयरिंग हूंदो तव्हां सभिनी लाइ, तव्हां कुझु न कुझु ज़रूरु सिखी सघंदव। असां वटि जेका अॼु पहिरीं शख़्सियत आहे उहा आहे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन इकरा यूनिवर्सिटी ऐं उन्हनि जा ॿिया काफ़ी रूप आहिनि। शी इज़ ऑल्सो इन सो मेनी फील्ड, सो आहिस्ता आहिस्ता आहे सरप्राइज़ तव्हांखे ॾींदा हलंदासीं। हर नेम इज़ मिस कैफ गज़नवी। अस्सलाम वालेकुम कैफ, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। और आपका चेहरा देख के तो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए होंगे और हाँ दे मस्ट बी। उसने कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सिंध टीवी में पहली दफ़ा नहीं है मेरा आना, ये मेरा शायद सेकंड या थर्ड विजिट है एंड आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट हियर, क्योंकि मेरा ख्याल है सिंध की जो बहुत बाकी शहर हैं उनको अप्रोच करना बड़ा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए, ख़ासतौर पे कराची में रहते हुए या हैदराबाद में भी रहते हुए। मैं खुद हैदराबाद से हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि अंदरून शहर में कितना टैलेंट है जिसको हमें सामने लाना है। और माशाल्लाह से आपने मुझे बताया कि आप भी बॉटनी में कर चुकी हैं मास्टर्स और हैदराबाद से किया। सो एज अ टीचर, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुझे ये बड़ा फ़ख्र होता है कि हम छोटा सा शहर भी होते हैं लेकिन उसमें एजुकेशन को हम बहुत अहमियत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मज़ीद बात करते हैं। आज के जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, असांजो जेको ॿियों गेस्ट आहे, ही इज़ अ डीन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग इन सेम यूनिवर्सिटी विद हर इन इकरा यूनिवर्सिटी, PhD from Australia, MBA from Canada, York University, and he have been traveling around throughout the world, taught in 8 to 9 different countries. इन्हनि जी लिस्ट तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं। Dr. Daniel, Assalamu alaikum. Good morning. How are you? Very good, thank you. How you feel? I feel great. You feel great? I've been in Karachi now 4 months, and so far everything's going well, and it's a great experience. Yeah. Very nice. So you don't regret coming here? Not at all. Not yet. Not yet. Okay. Give me some time, You're and we'll see. thinking might be. But for now, it's great. Yeah. Very nice, very nice. ऐं असांजे घर भाती खे जेके असां सां रोज़ गॾु हूंदा आहिनि, असांजे प्रोग्राम खे ख़ूबसूरत बणाईंदा आहिनि, उन्हनि खे भी असां सलाम कंदा आहियूं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद बादल अली, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप मैं कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो? ये हमारे शो के, हमारे सिंध की, हमारा घर है, हमारे यहाँ की शो की बहुत बड़ी खूबसूरती है। रोज़ हमें अच्छे अच्छे कलाम सुनाते हैं। आज को भी आपको भी कलाम सुनाएंगे अच्छे अच्छे। हम महसूस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, सो मीडिया साइंस जो टॉपिक है इसके बारे में ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ बेसिकली मीडिया साइंस एंड व्हाट लाइक मीडिया इज़ प्लेइंग इन दिस फील्ड, व्हाट रोल दे आर प्लेइंग। तो ये इसका थोड़ा सा मीडिया साइंसेज या मीडिया स्टडीज़ बेसिकली एक बहुत वसी फील्ड है और उसके अंदर आपके ये जितनी भी हैपनिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं आज की वो आ जाती हैं, जिसके अंदर एनिमेशन है, एडवर्टिजमेंट्स हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग की सारी टेक्निक्स हैं, आपकी फिल्म एंड टेलीविज़न की जॉनर्स हैं। फिर हम थोड़ा सा अगर ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स की तरफ चले जाएं तो परफॉर्मिंग आर्ट्स की फील्ड्स हैं, जिस तरह थिएटर है, एंड देन मास कम्युनिकेशन जो कि ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग से भी रिलेटेड है। ये मीडिया स्टडीज़ है जो हम इधर बैठे हुए हैं इस वक्त, जो हमें लोग जिस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी आगाही जो है ये भी फ्रेश ही है अभी। पहले इतना ज़्यादा एक जर्नलिज्म से एक चीज़ पनपी थी जिसमें जर्नलिज्म को जब उन्होंने ऑथेंटिक करने की कोशिश की थी, क्योंकि हर किस्म का बंदा जर्नलिस्ट बनकर कुछ भी बोल देता था और ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड हुआ है। पीपल टुक स्टेप्स इनटू आइडेंटिफाइंग हाउ टू ऑथेंटिकेट द आइडिया ऑफ
such information being passed on to the viewers. तो उसको जब उन्होंने फॉर्मलाइज किया, पेडागोजिकल सिस्टम्स में वो लेकर आए, तो एक ये फील्ड बनी और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज का जो यूथ है वो उसका फ्यूचर ये स्टडीज़ है, एंड सो दैट्स व्हाट मीडिया स्टडीज़ इज ऑल अबाउट. What is your experience in this field? Alright, so I have always belonged to the fine arts side of whatever the system is like. So the art students they are artists basically. Yes, exactly. They come from art. Exactly. Definitely. I think this field allows you to be an artist and a technician at the same time. As well, yes. And so it kind of creates this fluidity, जिसमें हम कहते हैं ना कि आप अगर not to kind of say कि मैं उसको rigid कह रही हूँ या कुछ कह रही हूँ, but जिस तरह बिजनेस स्कूल में आपको बिल्कुल एक डेकोरम के साथ चीज़ें सिखाई जाती हैं, या आप अगर इंजीनियरिंग में चले जाएं, साइंस में चले जाएं, उनकी एक सिस्टम चला आ रहा है जो कि उनके हिसाब से सही है. मीडिया स्टडीज़ जो इज़ वेरी फ्लूइड, यू कुड कम अप विद अ कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट, और उसमें जो जॉनर्स हैं, टू कम अप विद दैट काइंड ऑफ रिसर्च इट्स सो इंस्टेंट एंड हैपनिंग कि वो फौरी तौर पे उसका रिजल्ट भी बच्चे को मिल जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि मैं कौन हूँ. ही और शी आइडेंटिफाइज विद देमसेल्व्स क्विकली. Artist with their interest, that is very easy. Exactly. Very easy. They can utilize their art. They can share their thinking, their provided concept, it's their their medium. ideas. Provided it's their medium. Medium. ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या फिल्म आपका मीडियम है, क्या डायरेक्शन, और फिल्म में भी क्या आप डायरेक्टर हैं, क्या आप डीओपी हैं, क्या आप आर्ट डायरेक्टर हैं, क्या आप प्रोड्यूसर हैं, या आप एक्टर हैं. This is very hard to know कि एक बच्चा आर्टिस्ट है. We can understand this कि एक आर्टिस्ट है, अब उनको उस बच्चे को पता नहीं चलता कि वो क्या हो सकता है. They know कि हाँ from school they can paint very well, they can sing well, they can dance well, they can act well. अगर वो बच्चा कोई all rounder है तो उसके बाद उसको समझ के आएगा कि what field is for him. Yes. Definitely. ये आप कैसे कंसल्ट करते हैं या कैसे like? Okay, so this is a very tricky thing, you know. You can never really say that you have guided the student in the right way. It's always a challenge. Always I think a challenge, wherever, yes. in every discipline. But what we try to do is, to our utmost potential, is to find out what the child requires, what he or she needs, and then just kind of give him a little push towards that direction. अब वो उसकी बात है कि उस तरफ जाना चाहता है नहीं. जैसा बहुत मैं इस वक्त ऑडियंसेस को कहना चाहूँगी ये बात, प्लीज, कि वनरेबिलिटी को ना छोड़ें, अपने हसासपन को ना छोड़ें, और उस हसास होने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से मना किया जा रहा है, कोई टीचर अगर आपको मना कर रहा है, तो ये असेस कर लें कि वो आपसे जेलस नहीं है, वो आपको नीचा नहीं दिखाना चाह रहा, वो सिर्फ ये बता रहा है कि बेटा हमें ओवरऑल एक आउटसाइडर के तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है, आपको ज़्यादा जल्दी वो स्टेप्स कवर करने में मदद हो जाएगी अगर आप हमारी बात थोड़ा सा सुन लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सुन लें. तो अगर एक बच्चा लेट्स सपोज गाना चाहता है, लेकिन अगर उसको क्रिटिक कर दिया गया है तो वो सुन ले उस बात को, वो ये ना समझे कि जो टीचर है वो तो एमी बोल रहा है. तो ये जो एक गाइडेंस का जो रूल है ना, उसमें इट्स अ 2-way स्ट्रीट. बच्चा अलाउ करेगा तो टीचर गाइड कर सकेगा. और हमें तो थ्रू आउट मेरी जो स्कूल सिस्टम की पेडागोजी रही है, उसमें वनरेबिलिटी वाज द utmost priority. In every we can say कि this is also a relationship of understanding and listening. Of course, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. Definitely. और मेरा ख्याल है इकरा यूनिवर्सिटी में एक बहुत जो खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि उसमें डिफरेंट डाइवर्स आपको टीचर्स मिलेंगे, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से मिलेंगे, एंड वी अलाउ देम टू बिकम इंटरडिसिप्लिनरी टू एन एक्सटेंट दैट यू कैन गो एंड एक्सेस एनीबडी, एनी टीचर, अगर वो आपको लग रहा है कि वो आपके जहन से मिलेगा, सोच से मिलेगा. तो ये एक इंटरेस्टिंग हमारा गाइडेंस वे है. बिल्कुल. अच्छा, डॉक्टर डैनियल, you have been and you taught in 9 countries almost. Yeah. What is difference? There must be very much difference here and there. अच्छा, we must talk about that, but after break. Now it's time for a little break. नंढड़ी साई वठूं था, असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो अॼु जो मोटिवेटिंग वेयरिंग प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम
भेरो वरी मोटे आयासीं पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में असां प्रोग्राम खे जितां छॾियो हुयो उतां ई गॾींदासीं डॉक्टर डैनियल आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन वन एंड दैट आपने इतनी कंट्रीज़ में पढ़ाया है, ठीक है ना, तो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर? Yeah. So the one interesting thing that I find is business or universities around the world are based on a British Oxford University model. It goes back a few hundred years. And business schools are based on the Harvard American model. So in a place like Pakistan, we'll have British-based English university system. Then they'll have an American-based business school, and all of that is embedded within the local culture. So it all it works, but it doesn't fit perfectly. So, for example, if we've got a British-style university in the United States with an American-style business school in the American culture, it works. It's fine. Same with Australia, New Zealand, UK, Canada. But when we go to developing countries and we put this combination within the local culture, it works, but there is something missing. Something is missing, or something is not perfect. Missing, or it's not quite a perfect combination, but it does work. It functions. It does work. So, for example, a place like Pakistan, there are multiple cultures within the culture and in different regions. And we have, I think it's over 400 universities in Pakistan. Yeah. And there's over 100 business schools. And so they're all trying to function in a similar way, which is generally accepted around the world of what a university should be and what a business school should be. But all of that is sometimes different from what the local culture would do if they weren't influenced by what a university or a business school should be. Should be. If that makes sense. And your challenges, you face the challenges. Yeah, so the teaching. challenges for me, so for example, about 22 years ago, I did my first teaching job in Mexico. And I had come from Mexico? Mexico. Okay. So I had come from Canada. I had been actually working in the film and music industries for many years. And then I did an MBA. And I was going to go back to Vancouver, where I'm from. You did MBA from Canada, York University. Yes. Yeah. Yeah. So I was going to go back to Vancouver, where I'm from, and work in the film industry again. But then I had an offer to teach business in Mexico. Mexico is beautiful and warm. Yes. Canada is very cold. So I went to Mexico. Just 1 year. And I liked it, teaching, working in the university. But the students there were completely different than Canadian students. So That is the task, to deal with students. And different countries, different minds, different opinions, different traditions, different styles, different accents. Yes. That's very hard. Yeah. So the one in Mexico, for example, I think it was the second week I was there teaching. At 2 o'clock in the morning, I hear somebody yelling my name outside my apartment. And it was a student yelling, "Danielle, Danielle." And so I opened, I thought, what's wrong? And he said, "Come on, we're all going for sushi." And it was a student and all the other students. And at 2 o'clock in the morning in this Mexican town, we went for sushi. And so for them, the teachers are part of your family. Wow. They're just part of the community. Wow. And it's the same. There's no level The distinction. same thing I think we discussed, that there should be a relationship of understanding and listening. Yes. The students, for students, they should listen. Yes. ये थोड़ा सा And होना that's चाहिए. the only way to do it is to become friends with them, so Huh, they understand that they're being definitely. heard and listened to. Yes. Right. But of course, there's also problems with that. Yes. Because then when it came time for exams, Yes. the students would say, they'd say, "Come on, teacher." They said, "You came to our birthday party. You came to our weddings and our funerals." They said, "You can't fail us or give us a low grade." So there's... Okay, it happens everywhere. But then the next job I did was in China. And in China is a very broad distinction between students and teachers. And it's very respectful. And there's no relationship between the students and the teacher other than the formal student-teacher relationship. So it was the complete opposite of the Mexico experience. Okay. Do you think it's good? I think so It's much not.
so much depends on the culture. So for example, in Mexico, because of the culture, it works. Because they might intermix with teaching faculty, teaching staff, but at the same time they know the social boundaries within those relationships. So a place like China, they don't have those relationships close with teachers, and so they keep that distinction very clear, the internal boundaries, the cultural boundaries. कब से चलता आ रहा है, and suddenly they cannot change this rule and Of these course, things. but it's a culture, na. It's a For culture. example, we're such a diverse society here because of the Silk Route, because of all the neighbors that we have around us. That some kind of infiltration from all cultures we've always adopted. So what happens is that कभी आप उसको उसमें क्यूरोसिटी में ले जाते हैं, कभी फ्रेंडशिप में ले जाते हैं. मुझे अक्सर याद है, आई एम सॉरी डैनियल, आई एम स्पीकिंग इन उर्दू, बट मुझे याद है कि हमारे टीचर्स जो थे, जब मुझे ग्रूम कर रहे थे टीचिंग करने के लिए, मैं मेरा ख्याल है 24 साल की थी जब मैं लेक्चरर अपॉइंट हुई थी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में. तो आई वाज द यंगेस्ट फैकल्टी मेंबर एट दैट टाइम, एंड मोस्ट ऑफ माय हेड्स वुड से दैट यू नो यू कुड स्टूडेंट के साथ ऐसे रहो कि वो आपके साथ दोस्त रहे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत ना हो कि आपके कंधे पे हाथ रखे गए और टीचर सुनाओ क्या हाल है. तो ये जो एक limits, हाँ, yes. वो एक लिमिट होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट विद फ्रेंडशिप शुड रिमेन देयर, because that is our culture. That is our हम culture. we are colonized also. Definitely. We keep that kind of decorum. We have that hoity-toity, Yes. you know, ways Yes, about yes, us. तो वो भी हमने रखना है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो भी कल्चर है जिसमें हम दोस्ती, यारी, मेहमानदारी, you know, सिंधी इतना यारी और संगत में बिलीव करता है. बिल्कुल. तो कैसे उसमें इतना फर्क आप टीचर और उसमें करोगे स्टूडेंट में? At some places we have to. Of course. And some places students should understand. बिल्कुल बिल्कुल. So ये थोड़ा सा इसको बैलेंस रखना पड़ता है ना. हाँ. We have to maintain everything and keep in balance. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आर्टिस्ट हैं आजकल के, how is media science for them? Would you like to answer What that, was the Dan? question? So today's artists that exist, how is the media science field for them? Oh, Do they in the welcome industry. it, or the industry Well, or the that's- education? You know, I can speak a bit to that. In Canada, before I went into business, I went to the Vancouver Film School, which is a very good film school in Vancouver is Canada. also in Canada, yeah. And yeah. and then I worked in the IATSE union, which is the big film union that does all the big Hollywood productions, and so many are done in Vancouver. So in my graduating class of the Vancouver Film School, I think 2 of us, out of about 30 students, 2 of us went on to actually work in the industry. Okay. The others did not. And working in the industry, so often I was told that film school graduates are more trouble than benefit. Because Okay. Was it? this was a long time ago. Long Okay. time No, ago. even today we face the same problem. I mean, most of my students are in the disciplinary committee all the time. I'm like, what? Why? Yeah, well, it's an interesting. So when I did film school, I grew up disciplined, just self-disciplined to achieve things. But when I went to film school, there were a lot of people that were not self-disciplined. That they wanted to be a movie star, or else they wanted to be a director or something famous. They came in with different fields and different minds, and But they didn't have the understanding, as you know, Sure. of the hard work that you have to go Definitely, through definitely. to achieve the things. Achieve the You things. can't just be a director It because is, you want to. media studies is a lot of physical and mental hard work. hard work. It tears you apart literally, because it's a creative field also. At the same time, it's Challenging. skill based. So the challenges are on both sides. You know, you can't just sit and let things happen. You have to be in charge of the set. Like I said in one of my other talks, कि डायरेक्टर जो होता है ना, वो सेट का गुंडा होता है. आपको चलाना आना चाहिए लोगों को. अगर आप नहीं, तो everybody will walk over you. Definitely, definitely. Right? Break it. No, there's अच्छा, no break. तो वो ये होता है कि इवन जो एक्टर है उसको ये समझ आना चाहिए, और फिर एक्टर को भी ये समझना चाहिए कि डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, वो आपको कहाँ तक है. इट्स सच अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस कि लड़ाइयाँ होती हैं, आपकी इमोशंस हाई होते हैं, क्योंकि सब क्रिएट कर रहे होते हैं अपने अपने एंड पर. एक स्क्रिप्ट होता है जो कि राइटर ने क्रिएट किया है,
उसका वन लाइनर किसी और ने सोचा हुआ होता है, उसको डायरेक्ट कोई और करता है, उसकी लाइटिंग कोई और करता है. In any good institute, in any good school, university, college, team, department, there should be levels. There should be balance in sites and positions. Then we can maintain perfectly. But see, that's where your first question now comes in. कि क्या लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या करना है. यहाँ यही तो vulnerability है कि मैं as an actor, मुझे पता है मेरी weaknesses क्या हैं, मेरी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं. अगर मैं डायरेक्टर पे मुसल्लत करूँगी या डीओपी पे मुसल्लत करूँगी ये चीज़, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी. तो आपको थोड़ा सा बैक स्टेप करना है और लेट गो भी करना है, ट्रस्ट करना है एक दूसरे को. टीम ऐसे बने एक दूसरे को ट्रस्ट करे. तो और मुझे लगता है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में we're trying to teach the students to trust each other so that this collaborative effort can happen. अच्छा कैफ, आपको कैसे लगा कि आप ड्रामाज में आ सकती हैं? आपने खुद ही बता दिया वेक्टर है, मैं सरप्राइज देने वाली थी. सॉरी नो प्रॉब्लम. तो आपको कैसे लगा? मैंने भी आपको देखे हैं, यू आर वेरी गुड एंड डेफिनेटली ब्यूटीफुल एक्ट्रेस. तो मुझे आप ये बताएं कि कैसे लगा, हाउ यू फील्ड के अब मैं इस साइड पे भी जाऊँ इन ड्रामा? नहीं, ये साइड पे जाने का बात का कभी भी नहीं थी. ये मैंने हमेशा से करना था. अच्छा. और बहुत बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए कि मेरे दौर में जब मैं इंटरमीडिएट करी थी, और ये लेट 90s का दौर है, उसमें कहीं पे भी आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्कूल नहीं मिलता. मैं एक आर्टिस्ट थी, मैंने बैंक में जॉब करके भी देखी. मैं बैंकर अच्छी नहीं थी, मैं सेल्स पर्सन अच्छी नहीं थी, मैं शायद बेकर अच्छी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे शेफ्स बनने का उस वक्त रिवाज ही नहीं था. वो तो चैनल्स खुलने के बाद एक शुरू हुआ रिवाज. वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हर बंदे के लिए हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं है. जिस तरह लाइक डैनियल सेड that there are more business schools over here. तो ज़रूरी नहीं कि हर बंदा बिजनेसमैन ही हो, और भी चीज़ें करना चाहता है वो. तो आज आकर मैंने अपनी वालदा को बता दिया. नाचती मैं थी, गाती मैं थी, एक्टिंग मैं करती थी घर में. तो अम्मी अक्सर मुझे बोलती थी तू तो मरासन पैदा हुई है. पंजाब में हम रहते थे तो वहाँ पे फन है ये. तो मैं कहा मैं क्या करूँ. तो एनीवे आई थिंक शी इज़ वेरी वाइज दैट वे कि उन्होंने मुझे एनसीए को आइडेंटिफाई किया और मुझे वहाँ पर इनकरेज किया कि मैं जाऊँ. और मैंने वहाँ जाके अपनी राह पकड़ ली. वहाँ पे थिएटर से मैं इंट्रोड्यूस हुई, सिंगिंग से इंट्रोड्यूस हुई, डांस से इंट्रोड्यूस हुई. साथ साथ हम ड्राइंग्स भी करते थे, डिज़ाइनिंग भी करते थे. मैं कुम्हारन बनी वहाँ पर. मेरी सिरेमिक डिज़ाइन मेरा वो था. And you started enjoying it and telling your mind, no, this is my field now. Yeah, because I got opportunities also. And then there was this film that kind of Demi Moore की फिल्म थी Ghost. Demi Moore was a ceramicist in that, and so I saw that film. वो हमारे दौर की फिल्म है, and I loved it. I said, oh my God, if she can do it, I can. She was my ideal at that time, and I realized that if this is the possibility for her, what possibilities lies ahead for me? What possibility? So I was just kind of looking for opportunities, and that's how I got into acting. जब मुझे सबसे पहले सरमद ने ऑफर किया, सरमद खुसट ने, कि मेरे ड्रामा सीरीज में काम करो, साजी गुल का लिखा हुआ था. दैट वाज यू नो माय ब्रेक थ्रू इनटू द इंडस्ट्री, एंड आई सेड आई लव इट, आई वांट टू बी हियर. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू एक्टिंग. वेरी नाइस. बट कैन आई टेल यू, Daniel has been associated with X-Files. आपने कभी X-Files देखी जो 90s के दौर में? So huge hit show. I will now. Yes, please ask him. That's awesome. Acha? Oh yeah, I was, because when I was, after I did film school, I started working my way through various production companies, and then I got into the IATSE. Why didn't you continue? It was very interesting. It was great work. I loved it. But the taxes in Canada are very high. So the more you, because we would work on the big movies, in the big TV shows, sometimes typically it would be 16-hour days. And then a long day might be as long as 18 hours. And then you would have 8 hours turnaround time and then start again. And it might be 12 hours or 14 hours or 16. And so after a few months of that, because there's no day off, after a few months of that and after a few years of that, it got a little bit tiring. So I did it for about 8 years. And then, because I was also working I was managing rock bands and working in a recording studio. And I was going to go do my MBA
and come Okay. back and be a Okay. super manager. But then I had the opportunity to Okay, you teach. started from there. Then I had the opportunity to go to Mexico, Very and nice, then very nice. that was much more enjoyable. But you're enjoying in this field as well. You love it. Yeah. Do you? So for the business, well, business offers lots of opportunities. So, for example, my first degree was in Old English literature and philosophy. Okay, old English literature. Okay. And And- philosophy. Yes. Wow. And it was a double degree. And so with that, the jobs that I could qualify for were nothing. There was nothing. I am so jealous of you right now. And so I had no money. I was working in the film, doing all that kind of thing. But long-term, looking for a long-term career or future, what would I do when I'm 70 years old? Where will I get my own money from? So I thought, okay, I'll try business school. And one of the reasons I went to business school was because a friend of mine said, you wouldn't be good at it. Oh my God. My friend said, no, you wouldn't be good at business. Stick to what you know. And so I thought, oh, okay, I want to try. I'll show you. Basically. Definitely. Acha, this is time for a break, little break. We're coming on this topic after break. वक्त थी नड़ी साई जो नड़ी साई वठूं था असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो अॼु जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध जी मोटी आयासीं नंढड़ी साई खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाणे अगरि महिमाननि जी इजाज़त आहे त अगरि आपकी इजाज़त हो तो कलाम सुन लें प्लीज इरशाद जब कोई प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा लज़्ज़तें गम से आशिना होकर अपने महबूब से जुदा होकर लज़्ज़तें गम से आशिना होकर अपने महबूब से जुदा होकर दिल कहीं जब सुकून पाएगा दिल कहीं जब सुकून पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा तेरे लब पे नाम होगा प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा तेरे लब पे नाम होगा प्यार का शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा
के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। Yes, Very nice. Dr. Daniel, कैसा लगा आपको song? Thank you. Beautiful. Pardon? How is the song? Wonderful. Yeah, very nice. You liked it? Yes, I did. When are you learning Urdu? Yes, Daniel, when are you learning Urdu? I know a few words. Choti choti. Okay, please. Badi gela. छोटी छोटी Badi gela. बड़ी गल्ला Gala? बड़ी गल्ला It's तो banana. पंजाबी है। Banana. बनाना बड़ा केला। बनाना Gela. No? केला Okay. केला के Gela. केला। Gela. This is a lost cause. And except See this, how hard we have Kela to. or Gela? It's केला. Gela. No, not केला. You know, here we were Okay, thinking we are come on, giving something Sindhi else. classes now. Except this. That's Oh, yeah. Probably choti it. machli. छोटी मछली, very nice. Okay. छोटी What would मछली. you do with the choti machli? I mean, how do I... We can say just machli. I could say motorcycle. And that's not even an Urdu word. It's like, okay, so हम इतना बोलते हैं motorcycle. Yes, it is an Urdu word. Yeah. So choti machli. Are you a Choti choti machli? machli or are you a badi machli? Let's ask Can him you that. say आप कैसे हैं? Aap kaise hai? Like it's like how are you? It means. yeah. हाँ, आप कैसे हैं? Aap kaise hai? हाँ, okay. Right? Good. Yeah. Teach him. आज Urdu. You're working together. You why should not? spend more time with us, you know. We need to learn. So when you both are coming in her drama serials, Yeah, I can cast you then. Okay, as the foreigner that doesn't know Urdu. Yes, wow. you're doing your job. With that, you can continue your interest. Yep. She is very good actress. Yep. So I hear. I haven't seen anything, but I hear. You Thank should. God. Well, before she arrived, people told me we have a famous actress coming to I'm work not with that us, famous though, yeah, but Acha. and everybody was all Yes, excited. you tell us something about her. What have you heard about her? We haven't spent much time together yet. Okay. unfortunately. I've only been there at ICRA about 4 months, and you've been Okay. what, 2 months. 2 months. 2 months. So we're both relatively new Yes. and learning the processes. We hardly know each other. Yes. Okay. So we can come up on also media science and education. Sure. What is difference in media science and art? Okay, art I think is just a field that deals with actually media science and art. It's just they're one or the same thing. Only the names are different and how you approach them. And art is really Like a media very science, we can say is the advanced technology for them. not well. Yeah, sure. What do you think? Art and media science. Art is very that- generic, right? That's one of those questions that's been around for a long Yeah. time. Now that you've said it out Yeah. loud, it's Well, very difficult to answer It's that. even when people ask the question, how do you define art, which people have been trying to do for hundreds Media of science, we years. can say, is also art. Okay, it plays very Of big course, role. of course. It See, is. art is everything. Art is even Definitely. business. Definitely. The art of business. The art of business. So art is basically an adjective, if I could use that word, yeah. And maybe media studies would be a certain, branch under that umbrella. So art is everything. This is also art. How we're talking, how we're dealing. Every channel has its own format of doing a morning show. Okay, for our viewers, you can say, tell them हाँ, कि ये किस तो- age के बाद होता है and किस like intermediate base पे है. So media studies जो होता है basically
हम लोग जो इकरा यूनिवर्सिटी में लेट्स सपोज हम करते हैं जो, वो हम लोग इंटरमीडिएट के बाद बच्चों को लेते हैं। सो ये बैचलर्स डिग्री है और मास्टर्स की डिग्री है, और इसमें अगर आगे चलकर बच्चा थोड़ी सी और चीज़ों को डेवलप करना चाहता है तो एमफिल और पीएचडी की तरफ और पोस्ट डॉक की तरफ भी जा सकता है। पोस्ट डॉक्टरेट, यस, श्योर, या डिपेंडिंग ऑन वो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है उसमें। तो बैचलर्स की डिग्री तो आपकी 4 साल की है, वो आपको मिलती है। मास्टर्स जो है वो आप 2 या 1 साल में करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्रेडिट क्या लेकर आ रहे हो, पीछे से क्रेडिट आवर्स कितने लेके आ रहे हो। इट्स अ क्रेडिट आवर्स सिस्टम, इट्स and would you say, Daniel, it's an American? Well, the university overall, again, they're all based on the British model. The British which then model, the Americans adopted. Sure. And so for the media school, I guess that's a combination of, Sure, of a yeah. British and American style. Yeah. But probably more American But style. in media Right. science, how many titles are there in courses? So courses are अनगिनत courses हैं, you know. But हमारी जिसमें ज़्यादा बच्चे आजकल के लाइक बच्चे ज़्यादातर जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो फिल्म एंड टेलीविज़न में कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको समझाना चाहती हूँ आज ये बात कि हमारी जो नेक्स्ट फील्ड है टीवी जो है वो रिडंडेंट होता जा रहा है। टेलीविज़न को आगे जाके लोग कम देखेंगे, वेब सीरीज़ की तरफ ज़्यादा लोग जाने, वेब पोर्टल्स बन गए हैं, लोग यूट्यूबिंग ज़्यादा करते हैं, सो वीलॉगर्स बन गए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि ये लोग सोचे एनिमेशन इज़ द नेक्स्ट न्यू थिंग फॉर द होल वर्ल्ड। और एनिमेशन के अंदर इतने सारे जॉनर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करें और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। It's very software based definitely, so I wouldn't say it's for everyone, लेकिन एनिमेशन में बहुत सारे तरीक़ेकार हैं to approach the final product. Like you think about that, you are giving them idea. Yeah. What do you think, Dr. Daniel? What is your idea and thinking about that animation field? Absolutely. So when I went to film school long time ago, it was before digital. So it was, Me too. but the animation side was just starting. And it was one of those things that a lot of people didn't go into. It was very expensive at the beginning, but it has become the largest aspect of some film schools around the world. I think Pakistanis should really delve into this क्योंकि ये establish नहीं हुई है अभी पाकिस्तान में। तो think about कि आप पहले बंदे या बंदी बन सकते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। बहुत सारी, this is what ये I wanted to say, एनिमेशन Mrs. की Kaif, फील्ड प्रोवाइड कर रही है आपको चीज। बच्चे बहुत ज्यादा हैं, हाँ। आर्टिस्ट की फील्ड बहुत बड़ी है, ठीक है, और रोज पता नहीं कितने आर्टिस्ट पैदा होते हैं और हर साल कितने आर्टिस्ट बन के पर फिर भी कोई नई चीज क्यों नहीं आ रही। दे स्टडी जो कंप्लीट कर दिया, जो कोर्सेज हैं ठीक है ठप, देन शायद उनको आगे प्रमोट करने के लिए कोई नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है तरीके क्या हैं। लड़कियां तो मोस्टली घर में बैठ जाती हैं बाद में, मोस्टली जो यहाँ का हमारा जो है। बिल्कुल सही है। तो मतलब क्यों इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में तो कोई नया कुछ निकल क्यों नहीं रहा। लाइक देखिए ये ना एक ऐसी बहस है जिसको शायद हम भी आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें इस बात का इत्मीनान कर लेना चाहिए कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 2000 बच्चा है एक डिपार्टमेंट में, वो 2000 का 2000 नौकरी नहीं करेगा बाहर जाके। उसमें से स्टूडेंट्स को, जैसा मैं अगर देखूं, और शायद मुझे लोग थोड़ा सा ओल्ड स्कूल समझें, लेकिन औरतों के लिए मैं समझती हूँ कि वो ये डिग्री लें, घर में बैठ जाएं, शादी का इंतज़ार करना चाहती हैं वो करें, बच्चा पैदा करना चाहती हैं करें, अपने उन कामों से फारिग हो जाएं जो माशरती तरीके से उन्होंने करने हैं और उनको जिन चीज़ के लिए ग्रूम किया जा रहा है वो कर लें। और खुदा न खास्ता आगे चलकर ज़िंदगी कभी ऐसा मोड़ ले ले जिसमें आपको कभी बाहर निकल कर काम करना पड़े, तो आपके पास ये डिग्री तो होगी ना कि आप जाकर किसी अच्छी जगह पर बैठकर काम कर सकें, आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े, किसी को ये ना कहना पड़े मेरी सिफारिश करा दें, किसी को कोई ब्लैकमेल ना कर सके आपको। तो अपने आप को खुद कफील तो करें। मैं माँ बाप वालिदैन को भी ये कहूँगी, अपनी बच्चियों को इतनी वुसअत दीजिए, इतनी छूट दीजिए कि वो पढ़कर एक डिग्री हासिल कर सकें। शादी में जल्दी ना कीजिए, whatever field they like, और whatever field there, but the degree should be there, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरीके का हो गया है कि जो लॉबी है जो कि डिग्रीज दे रही है वो ऑथेंटिकेट हो चुकी है, और इस डिग्री के अलावा आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं है। आप कहीं नहीं जा सकते, आपने इस सर्कल में रहना है। अगर आप इस सर्कल से बाहर हैं तो आप आउटसाइडर हैं। सो इन ऑर्डर टू सिक्योर योर सेल्फ
and protect yourself and your children and your family, you get that degree and get it over with, and then do whatever you want to, and then come back and use that degree whenever you want to. For men I would say, why I'm demarcating these two genders is because this is the society like. This is a society. औरतों का एक अलग तरीक़ेकार है, मर्दों का एक अलग रोल है. मर्दों को मैं ये कहूँगी कि अपने आप को जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, कॉकी ना बने, ओवर कॉन्फिडेंट ना हुए. I know the information is there, out there, on, you know, just with the touch of your hand you can find out so many things, but you still need a guidance. उस guidance को ढूंढिए और देखिए कि आपने कहाँ पे किस ज़ुमरे में जाके अपने आप को खड़े करना है, अपने आप को potential अपना एक्सप्लोर करना है, और फिर आप वो डिग्री लीजिए और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि माशरे में हमारे यहाँ पे मर्दों का निकलना आसान है. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे आपने मुझे बताया कि आप माशाल्लाह से ड्रामाज में भी हैं, and it's your passion, you can say. You are continuing with your continue and you are with your passion as well. You are in teaching, you are in Iqra University as well. I've come back to teaching. Okay, yes. okay, I've taken a U-turn. And you have also baby of 18 months. Yes, so, I do. So how do you manage all things together? Like, it's difficult. Working mother's life is a difficult thing, लेकिन I should say that, you know, so family support is very family important. support, definitely. आप अकेले नहीं कर सकते हर चीज़. ये मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि हर चीज़ मिलजुल के होती है, एक कॉम्प्रोमाइज़ से होती है. आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिचुएशन निकालनी होती है, और बच्चे की तरबियत तो बहुत ज़रूरी है. तो आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें अगर बच्चे की तरबियत करने वाला कोई घर में नहीं है. मुझे बहुत इस बात का सुकून है कि मेरी वालिदा, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड किसी ना किसी वक्त पर आकर उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर मैं इंटरेक्ट करती हूँ आके. तो उस बच्ची की ग्रूमिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो रही है, वो रोज़ कुछ नया सीखती है, वो एक खुशहाल बच्ची है, वो इग्नोर्ड नहीं है. तो उसको जो भी वो एक्सप्लोरेशन मोड में है उसको सुना जाता है, उसको देखा जाता है, उसको इग्नोर नहीं किया जाता. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. बच्ची, आपने बात जब शुरू की तो मेंटल हेल्थ डे हम मना रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे, कोई ना कोई ऐसा बंदा हो जो देखता रहे कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और वो उसकी सोच क्या डेवलप हो रही है, उसका कैरेक्टर क्या डेवलप हो रहा है, उसको टैकल कीजिए उसी वक्त. और मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी अगर मुझे लगेगा कि मेरी बच्ची इग्नोर हो रही है. बिलीव मी. कैफ बस पे वापस आते हैं. वक्त हो गया ब्रेक का. टॉपिक खेता ही गंढियूं था. ॾिसंदा रहिजो अॼु ख़ूबसूरत प्रोग्राम, अवेयरिंग प्रोग्राम, मोटिवेटिंग प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी हिकु भेरो वरी मोटी आयासीं अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. कंटिन्यू कंदासीं टॉपिक उतां जितां असां छॾियो हुयो, मेंटल हेल्थ के बारे में. जैसे आप बता रही थी कुछ. तो बेसिकली हमारे बच्चों का जो एक मसला है यहाँ पर, हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि हम वही बने जैसे वो थे. ये मैं जनरली बात कर रही हूँ. बाप समझता है कि ये मेरा बेटा है तो ये मेरे जैसा ही होगा, ये मेरी बेटी है तो ये मेरी जैसी होगी. माँ का ये ख्याल होता है, मैंने तुझे ऐसी तरबियत दी है. हम ये भूल जाते हैं कि वो एक अपनी आइडेंटिटी है. माँ वालिदैन को ये समझना चाहिए कि उनकी औलाद जो है इस दुनिया में इनकी वजह से नहीं आई, इनके थ्रू आई है. वो इस दुनिया में किसी काम के लिए आई है. हम सब किसी वजह से इस दुनिया में, इस बात को सामने रखना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं करी कि बच्चा डिसरिस्पेक्ट करे और आप उसको जाने दें. उसको डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड माशरा हैं, हमने उसको उस सोसाइटी को आगे बढ़ाना है. लेकिन बच्चे को इतना ना दबाव में डालें कि वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी अना, अपनी खुद मुख्तारी सब खो दे और वो बन जाए जो आप हैं. अगर मैं अपनी माँ की तरह बन जाऊंगी तो ये वही बात होती है कि उस्ताद हमेशा चाहेगा कि मेरा स्टूडेंट मुझसे आगे दिखे, एक अच्छा उस्ताद, वो मुझसे आगे स्टेप्स ले. A teacher would never want that his student or her student should just stay at the same level as वो आगे बढ़ाए एजुकेशन को लेकर. तो वो आप बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हो तो माँ बाप भी तो सबसे पहली
हमारे उस्ताद और उस्तानी होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। असातिज़ा हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि आप लेट गो करें बच्चे को, लेट गो करें बच्चे को। उसको ढूंढने दें अपनी राह। और जब आप ये नहीं करेंगे तो बच्चा जहनी दबाव का शिकार होगा, अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा, वो कभी भी बड़ा होकर, तभी बहुत सी जगहों पर इतनी नफ्सा नफ्स, एक तो दौर नफ्सा नफ्सी का है और फिर हम अबतरी का शिकार हो जाते हैं, हम परेशानी का शिकार हो जाते हैं, बेसबाती की तरफ इशारे होते हैं और हम समझते हैं कि अब क्या रहा है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं रहा। इस तरह की बातें एक वक्त आता है जब एक बंदा करना शुरू हो जाता है, फिर वो एक नेगेटिव ट्रेल स्टार्ट हो जाता है जिसमें ट्रिकल डाउन करना शुरू करता है, फिर आपके बच्चे फिर वही साइकिल स्टार्ट होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स, किड्स या यंगस्टर्स हैं जो आजकल के ऑल चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ के बारे में। बट आजकल के जो वी कैन सी जो खवातीन हैं, ठीक है ना, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में है, डिप्रेशन में, एनजाइटी में, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग इशू इन आवर सोसाइटी के हम किसी को समझते नहीं हैं एंड देन डोंट इवन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एग्जैक्टली what is problem they are facing and what we can say roller coaster they are. Okay. किसी रिलेशनशिप में आप अक्सर देखते हैं सासें अक्सर बहुओं को कहती हैं हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता था, या हम तो ऐसा नहीं करते थे। आप कंपैरिजन शुरू कर देते हैं नहीं, विदाउट नोइंग मत व्हाट दे करें। हैव। या बहुएं आती हैं अपने घर की कोई बातें ऐसी लेकर आती हैं जो समझती हैं कि वो करके सुपीरियर हो जाएंगी। आपने माहौल में ऐसे चलना है जिसमें सब मिलकर चलें, सब दोस्ती के साथ चलें, सब मोहब्बत का जज्बा ना मरने दें अपने अंदर से। ये बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ का जो एक सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त जो मसला है वो ये है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करना छोड़ दिया, हमने अपने आप से मोहब्बत करना छोड़ दिया। मैं अगर अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, अपने आप को जगह नहीं दूंगी कि मैं पनप सकूं, मैं अब खिल सकूं, तो मैं कभी भी एक्टिंग की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं ये समझती रहूंगी लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं किसी को, ठीक है आप किसी को दुख ना पहुंचाएं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप अपने आप को पहले दुख ना पहुंचाएं ताकि आप किसी को। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लोग नहीं समझते, शायद कभी कभी हम भी नहीं समझते कि इंसान खुद खुश नहीं रहता ना, वो दूसरे को भी खुश नहीं रहने देता। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। If we are not happy, we're not letting anyone happy. Yeah, well, that's an interesting. That's an interesting, point. and this is the reality. Well, one of the things that I deal with in my research is well-being, and the classes that I teach or presentations I do, I like to start with the statement that how you feel affects how you perform at work, and then how you feel at work and how you perform affects those people around you and how they feel, and it affects their performance, and all of that affects everything. And so if somebody comes to their work or to school and they're depressed, you can't hide that. It's very hard, difficult to hide if you're depressed, even if you're smiling. Definitely. People can see through. Sure. And that affects the people around them, which affects the whole mood of the place you're at. And if it's an organization, it affects the effectiveness of that There's organization. whole chain. Mental health, depression, your thinking, your stress comes from family, and something which is in disorder. सारा एक वो बिल्कुल है। हाँ, ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि सपोर्ट देने में क्या जाता है, किसी का सपोर्ट दे दो यार, अगर कोई एक स्माइल दे दो। हाँ, एग्जैक्टली, दैट इज द ओनली सपोर्ट यू नीड समटाइम्स, कि कोई बैक कर रहा है आपको, कोई आपके बारे में सोच है और आपने स्माइल आपको उसने दे दी। हम जिस तरह बाहर निकलते हैं, मैं कभी किसी दुकान पे जाती हूँ, मैं हमारे जो दुकानदार होते हैं मैं उनको सलाम करती हूँ, उनको आदाब करती हूँ, उनसे स्माइल करके बात करती हूँ। जो हमारे साथ घर में हमारे साथ काम कर रहे होते हैं लोग, हमारी घर की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, उनको भी स्माइल के साथ सुबह आप प्लीज़ उसको मुस्कुराहट के साथ उनको घर में बुलाएं, उनके साथ अच्छा रवैया रखें ताकि उनको भी समझ आए कि उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है। उनको बदतमीज़ी से अगर आप पेश आएंगे तो वो भी एक अपनी माली हालात से तंग आए होते हैं, उनके घर में भी उनको कोई ना कोई मार रहा होता है, कोई धुतकार रहा होता है। जब वो आपके घर में आते हैं, आप कम से कम उनको वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अच्छी निगाह से देखें, प्यार से बात करें,
जब हमारे इतने टेंशन से तो उनके कितने होंगे. बहुत ज़्यादा. दिस इज व्हाट वी कॉल द वे यू सेड, दिस इज पॉजिटिविटी. पॉजिटिव Yes. एटीट्यूड है ये किसी इंसान का कि यू लुक समवन एंड यू गिव स्माइल, यू आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड यू, एंड दिस इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड. एंड जो खुद खुश रहने का आदी होगा वही ये कर सकेगा. और हमारे माशरे में ऐसा सोचा जाता है, इंटीरियर सिंध में मोस्टली मैं उसी की बात करूंगी, या दूसरे कंट्रीज में भी होगा जहाँ पे ऐसे इंटीरियर सोसाइटीज़ या हैं जो बहुत सारे ट्रेडिशंस में घिरे हुए हैं. वहाँ पे ये सोच होती है कि नहीं, हम सपोर्ट करेंगे तो ये बच्चा ढीठ हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा. दिस टाइप ऑफ डायलॉग्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे आपने कहा कि यार एक स्माइल दे दो, लाइक कॉन्फिडेंस, तो मुझे उससे भी अपने हस्बैंड की याद आ गई. सो वी अप्रिशिएट, यस, हम उनकी इज्जत रखते हैं. अगर हम पे कोई ट्रस्ट करता है, यकीन करता है, हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, हर वक्त आपके दिल में उसका नाम आता है. एंड यू डू समथिंग गुड. यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और ये आपने बात की कि यू नो रूरल एरिया ट्रेडिशनल उसमें हाउस होल्ड में होता है. मुझे तो लगता है हमारे यहाँ पे सिंध में माशाल्लाह से थर में आप चले जाएं, बहुत खूबसूरत कल्चर है. जितना इंटीरियर में जाते हैं उतना ज्यादा वो कॉन्फिडेंट हैं और अपने अपने कदम जमा कर चलते हैं. वो जितना अर्बन सोसाइटी में आते जाएं, जिस तरह ये एरिया हमारा कराची है, इधर ज्यादा नफसा नफसी है, इधर ज्यादा परेशान हाल लोग हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त ही नहीं एक दूसरे को देने का. For example, Daniel, I've been in the university for 2 months now. Hardly we've met 2 or 3 times, because it's just you're so busy doing other things. But you know, we've been talking about this, that somewhere there should be a space where we could sit and just talk, which is not related to politics, which is not related to work. Peace of mind. Yes, it should only be about things that make us happy. Or make us, which are problems for us, and maybe we could help resolve each other's problems. लेकिन वो जगह होनी चाहिए. Very funny, in today's generation people are running after peace, happiness, money. They don't know it comes within us. Exactly. Yeah. In every country that I've worked in, I ask the same question of my colleagues and students: are you happy? And it often then we have to find what is the word for happy in that language, and some languages don't have the same word happy as we do in English. Wow. So my Russian colleague, I don't speak Russian, but my Russian colleagues, when I worked in Kazakhstan, they were telling me that in Russian they don't have a specific word for happy. Wow. They have different words that kind of relate to that. Yeah. And so it's interesting, what we always have to, I think, ask the question, what is happiness? And then you have to ask, well, how do you get it? And who is responsible for helping you get it, if anybody? Or is it your own journey to find your own happiness? It's not an easy question. It's you. Yeah. So you have to figure out first Same what time it is. it's hard. In same time it's nothing. It's very easy. If you are positive, if you are satisfied, if you have peace, if your decisions are correct, Well, I think, then like you are you say, happy. if you have peace. So, and like you were saying, in the families. So some people, in many different cultures, the parents can have a very dominating role over the Definitely, children. yes. So when I grew up in Canada, the children have lots of freedom, and then when you're 18 years old, you go. You make your own way, yes, whether you have troubles or not. You make your own way, and that's how you grow up. But in a lot of the Asian and Latin cultures, it's you stay with your parents, who control a lot of things until the point when you get married, or Even move- then, even after or that. even then. And that's not a bad thing. I'm just saying that's it's good a thing culture. as well. Yes, and I know that you're not critiquing the culture, but I'm just for the audience कि ये बुरी बात नहीं है. नहीं है. ये हमारा कल्चर है, हमें ग्रूम ऐसे किया गया है. To date, I go back to my with mother. so much care as well. Yes, So yes. much Yeah. care. They have so much burden because Yeah. of their kids. वहाँ पे चलें ठीक है, बच्चों को आज़ादी दे देते हैं कि 18 years के बाद. That is also good thing. क्या क्या आपके कदमों पे वो खड़े हो सकें. But the government allows that. Allows the government caters that. that. हाँ, So that's a different culture. Different and culture. So yeah, go ahead, What Daniel. I was going to say with that Yeah, is, yes. is that sometimes both of those, whether you're off at 18 years old, or you live with your parents after your own family grows up and grows up within that same household, I think both of them can present
different kinds of stresses and different kinds of joys. Joy. So some of those environments can absolutely help your life be happy and wonderful, but for some people it can also help the life be very constrained and difficult. And so what I've seen in some of the countries I've worked in is that when it's constrained and difficult, some of those people feel, students especially feel that it's they're trapped, or they don't know how to get out, and so they don't know how to deal with it. And so at ICRA we've got a resident psychologist, and if students have issues they can go to the psychologist, and but I think that's lacking in a lot of education systems, is to have that person where students can go to if they do have some kind of troubles, issues. ये जो हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मुझे लगता है एक ये बड़ा प्रेशर है आज के दौर में बच्चे को कि हमें सब देख रहे हैं और हम जज हो रहे हैं. सो ये जो एक जजमेंट पास करने का या ओपिनियन पास करने का एक जो कि मैंने तो दिखना है खूबसूरत, मैंने दिखना है इंटेलिजेंट, मैंने दिखना है कि मैं ऑन टॉप ऑफ थिंग्स हूँ, परफेक्ट होना चाहिए, हैपनिंग लाइफ है मेरी. हाँ, तो वो जो एक ये प्रेशर जो अनकहा एक प्रेशर है. मतलब आप इंस्टाग्राम खोलें, अभी कितनी आपको वीडियोस मिलती है जिसमें छोटी छोटी बच्चियाँ अपने ऊपर मेकअप कर रही हैं और एकदम से खूबसूरत हो जाती हैं, या फिर आपको एशियन वीडियोस मिलती हैं जिसमें उनकी फेसेस पतले हो जाते हैं और ग्लो कर रहे होते हैं. व्हाट आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? क्यों हम इस ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है? असल जिंदगी में हमारी स्किन में दाग हैं, धब्बे हैं, गड्ढे हैं, और हमारी आंख, एक आंख छोटी एक बड़ी है, दोनों साइड्स अलग अलग हैं, हमारे दोनों हाथ अलग अलग हैं. आपको कुदरत ने बता दिया है कि आप इम्परफेक्शन में ही खूबसूरत हैं. तो आप परफेक्शन की तरफ जब भागेंगे किसी भी चीज़, चाहे वो वालिदैन अपने बच्चे को अपनी तरह परफेक्ट बनाना चाह रहे हो, या बच्चा कोई वीडियो देखकर या मेकअप कर कर अपने आप को खूबसूरत बनाना चाह रहा हो, या किसी को देखकर जीरो साइज फिगर पे आना चाह रहा हो जबकि आपकी बॉडी जीरो साइज की है ही नहीं. तो आप, या किसी के मार्क्स 98 आए हैं और मैं तो 70 से ऊपर नहीं जा सकती, उस पर आप डिप्रेशन में चले जाओ. अभी हमारे मुल्क में तो खैर इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, लिखा ही नहीं जाता, लेकिन पड़ोसी मुल्क में मेरा ख्याल है जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो एक तादाद थी बच्चों की जिन्होंने खुदकुशी की, और वो किसी वजह, सॉफ्टवेयर के ग्लिच की वजह से वो बच्चे फेल हो गए, हालांकि वो टॉपर्स थे. और आप सोचिए कि बच्चों ने खुदकुशी कर ली. ये 16 और 15 साल के बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचा कि मरना बेहतर है मार्क्स कम लेने से या फेल होने से. इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम होम एनवायरनमेंट. बिल्कुल, होम एनवायरनमेंट भी है, पर हमारे एजुकेशन सेक्टर भी इसका वो है, जिम्मेदार है. हमने एज और 90s का वो हौका बना दिया है कि बच्चे की अपनी इनफरादियत जो कुव्वत है, जो जिबिल्लत है, उसको हम मिसमार कर चुके हैं, मार चुके हैं उसको हम. तो मुझे लगता है यूनिवर्सिटीज़ का ये, स्कूल्स का, ख़ासतौर पर मिडिल स्कूल्स का ये इस वक्त अलमिया होना चाहिए कि वो इस बात पे काम करें कि बच्चे कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहिए बच्चों का, और पेरेंट्स में भी आना चाहिए. वो कैसे होगा? वी शुड ट्रेन टीचर्स एज वेल. ऑफ कोर्स, टीचर ट्रेन तो होते ही नहीं हमारे यहाँ पे. वी डोंट हैव ट्रेन टीचर्स, डू वी, इन मिडिल स्कूल्स एंड ऑल? In what? In middle schools, anybody can become a teacher. Oh, okay. So, but of course, we're talking about become a teacher. We're talking about that. They have to have a qualification. Time for break. Time for break. Of course, I mean. वक्त थी नंढी साई जो, नंढी साई वठूं था. असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. जी, मोटी आयासीं अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में. टॉपिक खे, प्रोग्राम खे उतां ई ॻंढींदासीं जितां असां छॾे विया हुआसीं. जी, डॉक्टर डैनियल, इफ यू वांट टू गिव लाइट ऑन, पुट लाइट ऑन दिस टॉपिक. The topic of well-being. Yeah. And, when I first arrived in Karachi at ICRA about 4 months ago, had a conversation with our Vice Chancellor, Dr. Wasim Qazi, and he expressed an interest in looking deeper into the student well-being issues and their mental health or other issues related to that. Things that are troubling them or hindering their progress in their studies. And so with some of the faculty members, I started a discussion group, and we call it the well-being discussion group. And we started to look at
all of these different issues of depression or troubles at home, and we looked at what can be done about some of these issues. And we always have to be careful, because as a faculty, as a university, we have to know what our boundaries are. So we're teaching the students, but we also have to have boundaries in relation to stepping into their personal worlds and trying to help them. And so with the discussion group, we're coming up with, and we've got the resident psychologist working with us, coming up with what are our boundaries, what can we do to help students with mental health issues. And one of the big things is, was mentioned earlier, is training for faculty members and staff members to identify, only to be able to identify somebody who might have some mental health or well-being issues, and then refer them to the psychologist. And then the psychologist can either do the counseling themselves or refer them to somewhere where they can get help. But I think it's very important for business school or any school, universities, to be able to identify students or even faculty or staff that might have the signs of having some issues, well-being issues, and then finding or knowing how to direct them for help. There are so many things in, especially depression with mental health, if we can take it. There is also anxiety, fear, insecurity for future career, and mostly some of them they bear split personality, and they want to do something and they are pushed and for something else. So, matlab, there are so many ways, so many things. We cannot see and take care of everything, but let's say in China, China is they take their academics very seriously, and the children from a young age, early in the morning till late at night, they're with tutors, and then in their regular schooling, and then with tutors, and so their memorization and these other skills are very, very good. But in the business classes I was teaching in China, I would often ask students privately, I'd say, what would you, if you could do anything, study anything, and it didn't matter what parents thought, or family, or society, or the culture, or money was not a problem. Without any fear. What would you study? And these are business students. And what do you think they said? Poetry, dance, art, theater. Artist. They wanted to study things to express themselves. And one student, he was an engineering student studying an MBA, and he was about 30 years old, and he was very rigid. And I asked him, what would you study if you could? And it took about 3 weeks before he told me, because I kept asking him, and he says, I cannot say. And then after 3 weeks, he told me, he said, you're sure you won't tell anybody? Oh my God. And I said, and so he said, okay, he would study poetry. Wow. And I asked him why. Poetry. Poetry. He said, I wanted to express my soul to the world. And I thought, that's very interesting. And so he was working in a family business, and he was required, basically for the rest of his life, to work in the family business. Like, because of money, because of future, parents have fear that what will my child earn? What will be his future, his or her future? Because of that, they kill. It's not even, बुरा भी नहीं बोल सकते, parents बच्चे के लिए अपने सोचते हैं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकते. If we can take, if you can take both things, and we go with the flow, कि ठीक है, finances भी देखने हैं, we can see finances too, and we can be with our passion too. That is good thing if you continue both things and maintain it. If you can do both. If you can do both, that's best. That's a wonderful ये जो thing. दौड़ है ना कि हमने डेडलाइंस दे दी हैं और उसमें हर बच्चे को हर वक्त मतलब 15 इयर्स की एज में आप मैट्रिक कर लें, 19 साल की एज में आप इंटरमीडिएट कर लें, 20 साल की उम्र में आपको यूनिवर्सिटी में चले जाना चाहिए, 23 साल तक आपको या 22 साल तक बीए डिग्री मिल जाए, मास्टर्स भी जल्दी से कर लें. ये जो एक है कि बच्चा जो है उसको एक्सप्लोरेशन का टाइम ही नहीं मिलता. जो जब बच्चा छोटा होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सोक कर रहा होता है बहुत सारी एनर्जीज को. जब आप उसको रोक कर किसी एक ऐसे सिस्टम में डाल देंगे जिसमें उसकी एक्सप्लोरेशन जो है वो डोमिनेट हो जाएगी बाय बीइंग डिक्टेटेड,
then he would never be or she would never be looking within themselves and exploring themselves. तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉप लगना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी, मैं और मेरे हस्बैंड इस बात में सोच रहे हैं, मे बी we'll होम स्कूल her. We would want her to, if she's showing signs of becoming good in something which is not being offered in any school in Pakistan, तो हम उसको घर में ही वो तालीम दिलाएंगे. उसके लिए कोई उस्ताद रखेंगे घर में और हम बाकी चीज़ें खुद कराएंगे. ये जो स्कूल सिस्टम के ऊपर पेरेंट्स ने बहुत दबाव डाल दिया ना, ये भी अनफेयर है कि आप सब पढ़ाएं, आप सब सिखाएं. जो बच्चा घर आके स्कूल में तो वो 8 घंटे के लिए होता है, बाकी रिलैक्स एनवायरनमेंट तो उसको घर में मिल रहा होता है, जिसमें वो आसान है उसके लिए चीज़ों को अपने अंदर जज्ब करना, लोगों को सुनना, समझना. बिल्कुल. जब आप उस वक्त में उसको वो टाइम ही नहीं देंगे तो बच्चा तो मेंटल हेल्थ की तरफ जाएगा. 13 साल की उम्र में अब ये बात समझ में आ गई, केमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, बच्चा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है. ये उम्र है 13 साल की, जिसमें आप बच्चे को देख रहे हैं कि आपका बच्चा दरवाज़ा बंद करके या किसी से कोई डर के या कहीं भाग तो नहीं रहा. आप आइडेंटिफाई उसी वक्त अगर कर दें, बच्चे को मेडिसिन मिलेगी, वो ठीक हो जाएगा. आपने मेडिसिन देनी है उसको. हमारी खाने के तरीक़ेकार इतने कन्वीनियंस फूड्स वाले हो गए हैं. वी हैव सो मच हार्मोन्स एंड प्रिजर्वेटिव्स इन आवर फूड. इट्स बाउंड टू अफेक्ट अस आवर हेल्थ एनी वे दैट इट कैन. हम लोग ब्रॉयलर मुर्गियाँ खा रहे हैं, 6 हफ्ते में वो इतनी मोटी तरोताज़ा हो जाती हैं, और वो बड़े हम वो KFC के चिकन्स खा रहे हैं, वो हमें अफेक्ट करेंगे. कितना बंदा है जो घर में ऑर्गेनिक फूड एक हमारा ही शो था, उसमें ये बात की थी, टीचर आई हुई थी किसी कॉन्वेंट स्कूल की. उनसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनसे मैंने ये पूछा था कि उन्होंने कहा था आजकल बच्चे बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है ना, स्कूल में स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं ग्रोइंग स्टेज पे हैं, बीमार हैं. रीज़न भाई क्या होता है, यही कि माँ उन्हें खर्ची दे दी या घर से उनको पैसे मिल गए, 50 रुपीज़ 100 रुपी या सम बक्स एवरीवेयर, वहाँ जाके उन्होंने खा लिया और बीमार हो गए. ना उनको रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स या घर पे जैसे पहले माएँ बना के देती थी कि सूप्स हैं, यखनी है या कोई अच्छा फूड है, तो उससे एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट ना, कि आप नहीं इससे क्या होगा, समझ से कि नहीं भाई डॉक्टर के पास आप डॉक्टर तो डॉक्टर बता सकता है. नो, होम एनवायरनमेंट इज मस्ट. एंड कैन आई ऐड, ये जो मेंटल इलनेस है, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर इलनेस. यू कैन गेट अ टाइफॉइड, डेंगू, चिकनगुनिया इतना ज़्यादा आम हुआ है. इट्स एन इलनेस एंड इट कैन बी ट्रीटेड. खुदारा ये ना समझें कि बच्चा पागल हो गया है. आपका बच्चा डिमेंटेड नहीं है, आपका बच्चा एबनॉर्मल नहीं है, आपका बच्चा मेंटल एक ऑर्गन है हमारे यहाँ पर, जो कि जिसको सही उसकी खुराक नहीं मिल रही है, वो मैल फंक्शन कर रहा है. उसको खुदारा छुपाए मत. आजकल हमारी जनरेशन सपोर्ट भी इतना अजीब अजीब ऐप्स को कर रही है. आपने सुना होगा ज़रूर, मैं नाम नहीं लूँगी, दिल तो बहुत कर रहा है नाम लेने का, पर नहीं लूँगी. किचन को ताला लगा दें और आपके घर पे ये डील्स पहुँच जाएंगी. You know that. Yeah, that is also dangerous. Yes. But again, what do you say? You talk about urban cities, and that is what's happening here. What's happening like yesterday, we were sitting in our office and we were talking about, वो फला आंटी ने ना बड़ा अच्छा अपना किचन में डब्बे पैक करने शुरू किए. हमारे जो वो हैं ममालिक हैं, यहाँ पड़ोसी ममालिक, वहाँ तो ये आम होता है. ठीक है ना, आपको मिलते हैं टिफिन्स बने और वो जाके दिए जाते हैं ऑफिस में कि घर का खाना, होममेड फूड आपको मिलता है. लेकिन लेट्स सपोज इफ आई एम नॉट एट होम एंड आई एम नॉट मेकिंग दैट फूड, सो आई वांट समवेयर टू गेट होममेड फूड. Fine, that's fine, but that does not mean that you eat anything and everything that that should not be acceptable. That should not be acceptable, definitely. And you need to keep an eagle's eye on what you're putting inside. We are coming on the same topic. अगर आपकी इजाज़त हो तो एक song सुन लें. Please, ज़रूर साथ बादल. छनन 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 पायल चमके, छनन 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 पायल चमके, नैन नशीलों से मध छलके, नैन नशीलों से मध छलके, धुरत धुरत नच नाच नाचनी, धुरत धुरत नच नाच नाचनी, छनन 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 पायल चमके, छनन छनन
छनन छन पायल चमके छनन छनन छन पायल चमके नैन नशीलों से मत छलके नैन नशीलों से मत छलके धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाचनी छनन छनन छन पायल चमके नाचू याद रखा सा दर्द है नाचू याद रखा सा था धिन्नाता तिन्ना रे सा था धिन्नाता तिन्ना रे सा धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाचनी छनन 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 पायल चमके छनन छनन छन पायल चमके छनन छनन छन पायल चमके नैन नशीलों से मत छलके नैन नशीलों से मत छलके धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाचनी छनन छनन छन पायल चमके तड़पे पाँव ताल की लय पे तड़पे गोरी तेरे गजरे महके गोरी तेरे गजरे महके नी सा सा दा नी बाबा दादा मामा बाबा गा मामा रे रे गा सा सा रे रे नी सा नी सा सा दादा नी बाबा दादा मामा बाबा गा मामा रे रे गा सा सा रे रे नी सा नी सा सा दादा नी पापा दादा मामा पा नी सा सा दादा नी पापा दादा मामा पा सनी दा पा मापा दा नी सा 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 सनी दा पा मापा छना ना छना ना छना छना छनन छनन छन छनन छनन छन छनन छनन छन छनन 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 छन छनन छनन छन छनन छनन छन 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 छनन छनन छन छनन 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 छन छनन छनन छन छनन छनन छन छन पाँव ताल की लय पे तड़पे गोरी तेरे गजरे महके गोरी तेरे गजरे महके धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाचनी छनन छनन छन पायल चमके छनन छनन छन पायल चमके छनन छनन छन पायल चमके नैन नशीलों से मत छलके नैन नशीलों से मत छल धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाच धुरत धुरत नच नाच नाचनी छनन छनन छन पायल चमके वक्त हो गया एक छोटी ब्रेक का वक्त थी नंढी साई जो ज़बरदस्त सॉन्ग नंढी साई वठूं था असां सां गॾु रहजो ॾिसंदा रहजो जो ख़ूबसूरत प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध
जी वापस मोटे आयासीं नंढड़ी ब्रेक खां पोइ मुंहिंजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। जी सो और बताएं। आप क्या बताएं, आप सुनाएं। अब मैं सुनाऊं। अच्छा असां ऑफ एयर ॻाल्हायो पिए मुंहिंजे सॉन्ग ते जेको कल ही रिकॉर्ड थी मूंखे मिलियो आहे, रिकॉर्डिंग कंप्लीट थी आहे। उहो सॉन्ग असां तव्हांखे आख़िर में ॿुधाईंदासीं। थोरो पहिरीं उन सॉन्ग जे बारे में, असांजी ट्रेडिशन जे बारे में ॿुधायूं। अॼु असांजा जेके मौज़ूस महिमान आहिनि उन्हनि खे असां सिंध जो गिफ्ट प्रेजेंट कंदासीं। ये हमारा सिंध की सकाफत यू मस्ट बी नोइंग अजरक। ये आई विल मैं आप दोनों को दूंगी गिफ्ट में। थैंक यू। ओके Thank you. जी जी दैट्स एन ऑनर। प्लीज ओके, to you. Danny, would you like to go first? Here, please. You can. Oh, goes like that. Thank you very much. Welcome, welcome. You're looking good. Does it work? Yes. Does it work? Right. Please. बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you. That's wonderful. Thank you. Please sit. Yes. So, mental health, media science, and so much on. आप मुझे ये बताएं, what you see in today's generation? I see a lot of potential, and I think they have so much presence of mind because there's so much going on around them. Yes, So much yes. to absorb. मैं जब जवान हो रही थी तो हमारे पास टेलीविजन ही था और डिश कहीं किसी घर में आई थी, तो हमारे पास इतना, और इंटरनेट जो था वो भी वो था जो फ़ोन के साथ कनेक्ट होता था, और वो टाइम कभी चलता था कभी नहीं चलता था, वक्त लग रहा होता था, ऑन होता था नहीं होता था, और कुछ सर्व करने के लिए इतना ख़ास होता नहीं था। तो हम लोग बहुत सी जगहों पे आराम से स्लो पेस लाइब्रेरी में बैठ के चीज़ों को रिसर्च करते थे। आज ये है कि अभी बात हुई और बच्चे ने उसी वक्त सब चीज़ें निकाल दी। मतलब स्कूल क्लास में आप लेक्चर दे रहे होते हैं और बच्चा उसी वक्त बैठ के आपके लेक्चर से मुतालिक सारी चीज़ें निकाल लेता है और वो आपसे वो उसी तरह का सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो आई फील दैट दे आर, if I could say that, they are ahead of their time because the technology allows them to become that. And so मुझे लगता है हमारी यूथ के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप को किस तरीके से ग्राउंडेड रखें, और वो कर रहे हैं। अब बहुत एडवांटेजेस भी हैं। बिल्कुल है, मैं इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं ले रही। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग उस दौड़ में, बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम उस दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़्यादा हम पे इसलिए चैलेंज है क्योंकि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बहुत छोटा सा है, अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम हैं। मसला ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत सी जगहों पर, एजुकेशनल लैंग्वेजेस जो हैं वो अंग्रेज़ी में होती हैं, पर अब तो बच्चों को ये भी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, चाइनीज़ सीखें। तो ये जो इतना कुछ है जो उन्होंने करना है और अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना ताकि वो दुनिया के साथ चले, आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल एफर्ट कि हमारी यूथ वो कर रही है। और I see them going very far ahead. I don't know if I'll be alive to watch them be the place that we can see them, but you know, me and my husband mostly we talk on that कि साइंस को ऐसी तरक्की करनी चाहिए कि डेथ ना हो। हम लाइफ कैसे सेव कर सकते हैं, उम्र को कैसे बढ़ा सकते हैं। Oh, I don't want to live for a long time. we all want to live, but no, I want to die when but I'm सेहतमंद हाँ, if you want chance to live healthy life, you want, of course, बिल्कुल, because इतना कुछ हो रहा है। definitely कौन चाहेगा कि वो अनहेल्दी लाइफ चाहिए। हेल्दी लाइफ ही साइंस को ये तरक्की करनी चाहिए। हाँ, और इसी के अगेंस्ट काम हो रहा है, ये भी बड़ी अजीब बात है। ये भी बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी, बट द मॉनेटरी रिटर्न्स आर द प्रायोरिटी। व्हाट डू यू थिंक, डैनियल? Yeah, well, that's an interesting thing. A lot of people, again, around the world, very similar. People like their fast food, their quick, cheap food, but that food is not good for the body. Good for the body, very unhealthy. And the more expensive food, maybe the healthier food or organic foods, yes. fruits and vegetables, in some places they cost more,
but it makes, ideally makes you live longer. Definitely. And, yeah, one of the things I found in some of the other countries I worked in, I had a conversation with a psychologist, a psychiatrist, and a nutritionist that were working on a research paper together. And they were looking at the effects of nutrition on pregnant mothers. And so then following the point when the child is born, through early childhood nutrition, in through their schooling years and into university, because they were trying to discover some of the hindrances to students to study well. And they said a lot of it always came back to the nutrition in the womb and then early childhood, because that's where the brain is being fed with the nutrients. And so what they were also finding was a lot of countries don't have a lot of, or don't provide their children with vegetables when they're young, especially the green vegetables and various vegetables. Don't provide them. Yeah, so a lot of places, a lot of countries will have, you know, rice or breads, maybe fruits, a lot of meat, but vegetables in some places Yes, are yes, lacking. yes, 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 So- definitely. You're right. Because they're not, vegetables are not easy to eat sometimes, but Yes. fast food is very easy to I eat. love vegetables. Maybe because of my mom, she used to put in everything vegetable. Which is wonderful. Whatever. Right. I like vegetable. When I go to diet, it's very easy for me to eat just vegetables, even raw vegetables. Right. So that's something on university campuses. Yes. I would like to see on campuses Sure, yeah. more vegetables. More vegetables. More vegetables. Maybe just that. Yeah. More vegetables, raw vegetables. Everybody, for everybody. Oh, we're taking really great steps, small steps. For example, our campus is plastic free now. Yeah. And we're trying to make it eco-friendly also. So I think Dr. Okay. Wasim has a wonderful vision that way. absolutely. This Yeah. is beautiful topic Yeah. and unstoppable. और इस पे तो हम जितना बात करें कम है. बहुत अच्छा लगा. We are grateful you both came here. Thank you and so much for having us. Yeah. Thank you so much. और आप दोनों कोई मैसेज देना चाहें? कोई अच्छा for students, for youth? और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो आपके दिल में है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी अंदर से आपकी रूह आपको कह रही है करने के लिए, उसको सुने और उसको उस पे अबूर हासिल करें, उसको कर डालिए। ये जो बाद में सोचना है ना जाके कि काश मैं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा कर लेता, इससे अपने आप को बचाइए। आधे से ज़्यादा ज़हनी सुकून आपको इसी में मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहिए अपने अंदर की बातों को, अपने अंदर की बातों को सुनकर और उनको कर डालिए। बस ये कहना चाहूँगी। Thank you so much. Thank you so much, Mrs. Kaif. Yes, Dr. Daniel, a message from your side for our youth. Well, I think, for the youth, read. Doesn't Ikra mean read? Yes, The it word? does. Yeah. So I always tell students, whatever class you're in, or even if you're not in class, find something to read. Or if a teacher assigns a book to read, read it. Read it 2 or 3 times so that you know it. And by the time they graduate or as they get older, they will know so many things just from reading. Definitely, definitely. Yeah. Thank you so much. Thank you, Ustad Badal. That's true. And असांजो प्रोग्राम हाणे पंहिंजी पुगाणी ते पहुतो आहे।